Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam and today we are going to cover an important poetry which is really significant for all the literary aspirants of any competitive exams plus a part of Allahabad University's UG English Literature syllabus. This is BA Part 1, John Dryden's Absalom and Achitophel. One topic of paper 1 poetry we have picked Absalom and Achitophel, and this is a celebrated satirical poetry by the very popular 17th century satirist John Dryden. Heroic couplets की फॉर्म में लिखा गया है इसको सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1681 में. Till date, this poetry is acknowledged, considered to be finest political satire in English language ever. As I told you, it was first published in 1681. And if you have brief information of the history of English literature, 1660 was the Restoration period. And this person, John Dryden, was very much in favor of Charles II. This poetry is a direct response to a political crisis faced by King Charles II from 1679 to 1681. This is a satirical narrative poetry, as I told you, where Dryden is using biblical allegory. Although he is telling about the contemporary politics, but he is using a story from Bible to explain the current situation of the society, to discuss the events and major personalities involved in the current crisis in the country. Dryden was very happy when restoration was done in England. He really welcomed the restoration of the Stuart monarchy in 1660 and he wrote two poems celebrating King Charles II's return and coronation. You need to remember these names, Astrea Redux and To His Sacred Majesty 1661. These two poetries maybe can also be part of any of the competitive exam that you are to appear for. This is a biblical story taken from Bible and about the King David. David, the king of Israel, has many sons from many wives and many courtesans, many mistresses. So many legitimate sons, many illegitimate sons you can imagine. But his favorite son is Absalom and this son is illegitimate. The poem speaker implies that Absalom's character contains certain flaws. कुछ गलतियां हैं उनके कैरेक्टर में, लेकिन हमारे जो किंग है, किंग डेविड, उन गलतियों को अनदेखा कर देते. Those flaws are overlooked by his affectionate, doting father. हमारे किंग डेविड बहुत ही मर्सीफुल हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं. Despite King David's competence and mercy, his subjects, उनकी पूरी प्रजा जो है वो रेस्टलेस है, अनसेटिस्फाइड है. ऐसा हर जगह होता है. इट कैन नॉट बी द केस कि योर लीडर इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड मर्सीफुल, देन पीपल विल बी हैप्पी. पीपल कैन always feel unhappy, unsatisfied, can be instigated by the opposition parties, and same is the scenario here. So उनके अगेंस्ट बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होने लगती है. Plot soon emerged that threatened the stability of David's power, and a man named Achitophel quickly assumes command. एक मेजर पर्सनालिटी है जो कि पूरे ऑपोजिशन को लीड कर रहे हैं अगेंस्ट किंग डेविड, एंड दैट पर्सन्स नेम इज Achitophel. This person, Achitophel, once was in a royal service but became corrupted by ambition and attempts to incite popular discontent for his personal advantage. So this is the person who is very ambitious, maybe wants to get a higher position of either a very high profile courtier or king himself. So he attempts to incite, to lure the normal people and tell them that this king is not good and you are not satisfied. Achitophel then turns to Absalom. अब Achitophel की नजर पड़ती है Absalom पर. Using his verbal abilities to persuade the young man to join the plan against the king and grab authority over the rightful heir. Absalom को भड़काते हैं कि तुम अगर किंग के अगेंस्ट हो जाओगे तो you are going to be the next king. See how powerful you can be.
इनिशियली तो एब्सलॉम रेजिस्ट करते हैं कि आई कैन नॉट वेज अ वॉर अगेंस्ट माई फादर. Absalom initially resists, admiring his father's leadership, but he is quickly driven by his discontent with his illegitimacy and his own thirst for power. इलेजिटिमेट तो थे ही, लेजिटिमेट सन तो नहीं थे. वो इलेजिटिमेसी का कहीं ना कहीं उनको एहसास कराया जाता है, तो धीरे 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 वो डिसकंटेंट होते चले जाते हैं. एंड ही हैड हिज ओन थर्स्ट फॉर पावर एज वेल, सो ही इवेंचुअली अग्रीज टू पार्टिसिपेट इन Achitophel's प्लान. अब गोल क्या रहता है? The goal or the plot is that Absalom will take up weapons, take up arms against his father's alleged enemies. अपने पापा के दुश्मनों के अगेंस्ट हथियार उठाएंगे. ऐसा लगेगा कि पापा के साथ है. Claiming to protect the throne while forcing King David to declare him the next king. अब वो कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के फेवर में हथियार उठाऊंगा, उनके एनिमीज के अगेंस्ट हथियार उठाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने पापा को फोर्स करूंगा कि आई शुड बी द नेक्स्ट किंग, या फिर मैं ही उनका उत्तराधिकारी बनूं. Many undesirable characters quickly enter this particular tale, this particular plot, with the speaker of the poem describing and criticizing their flaws. जब भी किसी एक किंग के अगेंस्ट एक प्लॉटिंग प्लानिंग की जाती है, तो धीरे 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 करके बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं. यहाँ पर भी यही हुआ. और हमारे स्पीकर जो है इस पोएट्री के, ऐसा लगता है कि किंग डेविड के बहुत ही फेवर में हैं, और जितने भी लोग किंग डेविड के अगेंस्ट हैं उनके फ्लॉज हमारे स्पीकर को पता है. Absalom goes out to woo the audience and is met with enthusiasm by many. एब्सलॉम के पास बहुत ही अच्छी वर्बल पावर है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं वो. जिस भी ऑडियंस को वो एड्रेस करते हैं, वो ऑडियंस उनके साथ आ जाती है, उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है. किंग डेविड के एलाइज बहुत ज्यादा नहीं है. दे आर वेरी फ्यू इन नंबर इन कंपैरिजन टू द ओपोनेंट्स. लेकिन हमारे जो स्पीकर हैं उन एलाइज के ऑनर्स को लिस्ट करते हैं, उन एलाइज की क्वालिटीज हम रीडर्स को बताते हैं. Throughout the poem, the speaker defends monarchy's legitimacy. तो यहाँ पर एक्चुअली वो मोनार्की की लेजिटिमेसी नहीं बता रहे, चार्ल्स टू की लेजिटिमेसी ज्यादा बताई जा रही है. Decrying mob rule and civil upheaval threatened by the plotters. कि ये सिविल अपहेवल तो चलता ही रहेगा, मॉब रूल तो चलता ही रहेगा, बट द रियल थिंग इज द रूल ऑफ अ जस्ट king. And here in this poetry, this king is King David, and in reality, he was defending Charles II. अब तक किंग डेविड को भी पता चल चुका है कि people are just like that against me. He is now aware of the conspiracy against him and delivers an emotional speech in which he condemns his adversaries, all his opponents, and asserts his right to govern. मैं ही किंग हूँ और मैं ही किंग रहूंगा. I do not care about all the adversaries. ये पोएट्री बहुत ही abruptly end हो जाती है. King David delivers a speech and the poem ends abruptly following his speech, with the speaker assuring the reader that God was on David's side. अब हमारे स्पीकर का रोल आता है और स्पीकर हम रीडर्स को बताते हैं कि जो भगवान है वो डेविड के साथ है, and that David's reign would be quickly restored and strengthened against the plotters. जल्दी ही डेविड का वो पुराना गोल्डन पीरियड वापस आएगा और वो कॉन्कर करेंगे अगेंस्ट ऑल हिज प्लॉटर्स. ये पोएट्री हमें दिखाती है पावर की इम्पोर्टेंस. एकिपेटेल जो है वो मिस कैरेक्टराइज करते हैं किंग डेविड के माइल्ड, इजी गोइंग, इनोसेंट, हम्बल, काइंड बिहेवियर को, और सब लोगों को ये दिखाते हैं कि a king so mild, a king so easy going, a king so humble. How can that person be a king? I am so brave, I am a great warrior, I can be the king. So this conduct was used as an evidence of his kingly weaknesses. As a result, Achitophel attempts to use his own power to manipulate Absalom's sense of loyalty to his father.
एकिपटेल को एक वक्त पर दिखाया गया कि फिजिकल पावर बहुत है उनके पास, एक assertiveness है, and because of that assertiveness he is able to manipulate Absalom's senses also. But ultimately the king remains powerful. King David remains powerful. Ultimately Achitophel fails to shake the rule of King David. और अब आता है आज का सवाल. Dryden was hailed as the father of English criticism. Who hailed him thus? Coleridge, Pope, Edison और Dr. Johnson. मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट्स में लिखकर बताइए. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching. Best of luck for exams and please provide your valuable feedback in comments.